कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छे से चली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज़ 4। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टाइप ऑफ वॉल्व विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट its flow in the reverse direction is. Our options are sluice valve, air relief valve, reflux valve, pressure relief valve. This question is from environmental engineering. सभी को आता ही होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वॉल्व होता है जिसमें पानी को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट मिलती है, मींस पानी का बैक फ्लो नहीं होता। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, रिफ्लक्स वॉल्व। रिफ्लक्स वॉल्व को हम नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। चेक वॉल्व और रिफ्लक्स वॉल्व क्या होता है? इट प्रिवेंट्स वाटर टू फ्लो बैक टू अपोजिट डायरेक्शन. दे आर प्रोवाइडेड ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द प्लम्बिंग सेट एंड एट interconnection between a polluted water system and a potable water system. These are generally provided on the delivery side of the pump. These valve works automatically. Pressure relief valve. In hydraulic, a pressure reducing valve serves the same purpose as a pressure regulator valve in a compressed air system. It is one of a variety of pressure control valve available for hydraulic circuits. It is always used in a branch circuit and never in the full pump flow line. Next, air relief valve. It is a type of safety valve used to control or limit the pressure in a system. Pressure might otherwise build up and create a process upset, instrument or equipment failure or fire. The pressure is relieved by allowing the pressurized fluid to flow from an artillery passage out of the system. Score valve. This valve is used to drain the water out of the pipe system. And last is sluice valve. These valves are used to regulate the flow of water in the pipe system by dividing into number of sections. Our next question is the most reliable field test to determine the bearing capacity of a soil is. Our options are direct shear test, sounding test, cone penetration test, plate load test. This question is from soil mechanics. काफ़ी ज़्यादा easy question है ये। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, प्लेट लोड टेस्ट ही है, क्योंकि प्लेट लोड टेस्ट जो है वो हमारा फील्ड टेस्ट है। इसको हम लैब में नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंडक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होता है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लेट लोड टेस्ट इज़ ए फील्ड टेस्ट which is performed to determine the ultimate bearing capacity of soil and the probable settlement under a given load. This test is very popular for selection and design of shallow foundation. This test is performed at the level of foundation by putting test plate of size 30 cm or 45 cm, which may be circular or square. The load is applied on the test plate with hydraulic jack and settlement is recorded, which is further used to calculate the bearing capacity of a soil. This test is most reliable as this test is done under in situ conditions. Other advantages: being able to understand the foundation behavior under loading condition, evaluation of bearing capacity of soil at certain depth, and prediction of settlement for a certain load. Time and cost efficient, easy to perform. Next is direct shear test. It is used to measure the shear strength of soil. Last is cone penetration test. It is a method used to determine the geotechnical engineering properties of the soil. Our next question is the chloride content of public water supply should not exceed. Our options are 50 mg per liter, 150 mg per liter,
250 mg per liter, and last option is 80 mg per liter. This question is from environmental engineering, and the correct answer is option C, 250 mg per liter. चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाटर का टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कलर 5 to 15, टर्बिडिटी 1 to 5, एल्काइल लेस देन और इक्वल टू 200 mg per liter, क्लोराइड less than or equal to 250, fluoride 1 to 1.5 ppm. Our next question is, as per IS code, the characteristic yield strength for hot rolled high yield strength deformed bar is, our options are 515 Newton per mm square, 550 Newton per mm square, 500 Newton per mm square, 250 Newton per mm square. This question is from steel structures, and the correct answer is option A, 415 Newton per mm square. चलिए अब इसकी explanation देखते हैं। Steel commonly used in the construction industry are mild steel bars conforming to IS 432 Part 1, high yield strength deformed bars. Two types of HYSD bars are hot rolled HYSD bars conforming to IS 1139 and cold worked HYSD bars conforming to IS 1786. These are also known as cold twisted deformed bars or TOR steel. The most commonly used HYSD bars for RCC work are the CTD bars. As per table number 22 of IS 456-2000, the minimum characteristic yield strength for hot rolled yield strength deformed bar is 415 Newton per mm square. Our next question is, the head of water over the center of an orifice of diameter 20 mm is 1 meter. The actual discharge through the orifice is 0.85 liter per second. Find the coefficient of discharge. Our options are 0.2, 1, 1.4, 0.61. This question is from fluid mechanics. अब ये न्यूमेरिकल है तो ये सॉल्व करके ही हमें निकालना पड़ेगा। इसमें पूछा है हमें से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका, ऑरिफाइस का, CD हमें निकालना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन देख लेंगे। गिवन है हमारे पास हेड जो कि 1 मीटर है, फिर है डिस्चार्ज जो कि 0.85 लीटर्स है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब पर सेकंड में। नेक्स्ट डायमीटर दिया है जो कि 20 mm है, इसको भी हम चेंज करके मीटर्स में कर देंगे, 0.02 मीटर्स। हमें सारे यूनिट्स जो हैं सेम रखने हैं। डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफाइस इज़ गिवन बाय, उसका फार्मूला जो होता है वो होता है Q इज़ इक्वल टू CD इंटू A√2G, वेयर Q इज़ डिस्चार्ज, CD इज़ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफाइस, A इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, H इज़ हेड ऑफ वाटर। अब हम सारी वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करेंगे, तो जब हम पुट कर देंगे तो कैलकुलेट करके हमें CD निकल जाएगा 0.61। इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन D, 0.61. Our next question is, which of the following wall is constructed to resist the pressure of an earth filling? Our options are parapet wall, retaining wall, buttress, breast wall. This question is from highway engineering. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, रिटेनिंग वॉल है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर रिटेनिंग और सपोर्टिंग अर्थ अगेंस्ट देयर बैक आर कॉल्ड रिटेनिंग वॉल्स। अर्थ कैन नॉट remain vertical but would be in a state of equilibrium when it is assumed a neutral angle which is called angle of repose. If it is desired to retain
The earth vertically short portion of the earth will have to be supported by a wall called retaining wall. फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेस्ट वॉल. अ ब्रेस्ट वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल स्लोपिंग अराउंड फ्रॉम द कटिंग action of natural agents. Breast wall also prevents slides of unstable soils. The breast wall may be 0.6 meter wide at the top. Weave holes should be provided at regular interval among the length of wall to relieve the walls of saturated earth pressure. The breast walls are so designed that their line of pressure should be normal to the earth's pressure or thrust. Our next question is the main function of a diversion headwork of a canal from a river is. Our options are to raise water level, to store water, to remove silt, to control floods. This question is from irrigation engineering. The correct answer is ऑप्शन बी टू स्टोर वाटर. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डाइवर्जन हेडवर्क लाइक वियर और ब्राज is constructed across a perennial river to raise water level and to divert water to canal is known as diversion headwork. Flow of water in the canal is controlled by canal head regulator. It controls the entry of silt into canals and provide some pondage by creating small pond. However, the most appropriate B will be option to raise water level. Our next question is steam curing is used in. Our options are mass production of precast concrete, columns only, long slabs and columns. Last option is all of above. This question is from concrete technology. So correct answer is option first, मास प्रोडक्शन ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट. क्यूरिंग की हमारी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कमेंट बॉक्स में लिखना पक्का. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. स्टीम क्यूरिंग is advantageous where early strength gain in concrete is important or where additional heat is required to accomplish hydration, as in cold weather. Curing of concrete by steam under pressure increase the rate of gain of compressive strength of concrete, reduce the shear strength of concrete, increase the speed of chemical reaction. Steam curing sustainably reduces the time of attaining strength for any concrete. For precasting, the time for concrete to attain strength is considered as idle time. If this time is minimized, we can have more precast elements produced in less time using the same set of molds. Hence, steam curing is most adopted for precast structures. अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो प्रीकास्ट कंक्रीट ही यूज़ हो रही है और इसके लिए हम क्यूरिंग जो यूज़ करते हैं वो स्टीम क्यूरिंग ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the hardest among the natural stones listed here is. Our options are limestone, granite, slate. Last option is marble. This question is from construction material and the correct option is option B, granite. ग्रेनाइट की ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखी जाए तो ग्रेनाइट की सबसे ज़्यादा होती है, तभी ये हार्डेस्ट है. ओके चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ग्रेनाइट इज़ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इग्नियस रॉक, सिलिशियस रॉक. ग्रेनाइट इज़ हार्ड कोर्स ग्रेन्ड रॉक ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इट इज़ अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक. ग्रेनाइट कैन बी paradomically white, pink or grey in color depending on their mineralogy. These rocks mainly consist of feldspar, quartz, mica and amphicoal minerals. It contains 20 to 60% quartz by volume and at least 35% of total feldspar. Our last question of this test series is the stability of subgrade in a pavement is influenced by. Our options are water content, compaction, rigidity, material used. This question is from highway engineering. सभी को आता ही होगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर कंटेंट. तो कैसी लगी आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा.
Thank you so much for watching.